express the following in the form P upon Q. Means हमें इन्हें fraction के form में represent करना है, where P and Q are integers and Q not equals to 0. This question again has 3 parts. Let's start with the first one. 0.6 bar. What does it mean? 0.666 and so on. We will let x is equals to 0.666 and so on, and we'll mark it as equation number 1. It is a small trick of this question that जितने नंबर पे बार होता है, यहाँ पे एक नंबर पे बार है, so we'll multiply both side means LHS and RHS by 10. अगर यहाँ 2 नंबर पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 नंबर पे बार होता तो हम 1000 से करते. So what we'll write here, 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.666 and so on. 10x is equals to, when we multiply this by this, we'll get 6.666 and so on. We'll write here 10x. अब हम इसमें से स्प्लिट कर देंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन का x. 0.66 को जब हम इसमें से स्प्लिट कर देंगे, we'll get here 6. 6 plus 0.66 क्या बना? 6.66. So हम इसे ऐसे लिखेंगे. This is the way to calculate. 6 plus x. आपने इस पार्ट को x लिख देंगे and you'll write in bracket from equation 1. इक्वेशन 1 के थ्रू आपने इसे x लिखा बिकॉज आपने वहां लेट किया था. अब यहाँ प्लस में, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा. 10x minus x is equals to 6. Here it is 9x is equals to 6. X is equals to 6 upon 9 which is equals to 2 upon 3. अब आपने इसे P upon Q की फॉर्म में भी लिख दिया. P and Q are integers and Q is not equals to 0. I hope this trick is clear to you. Now let's do the second part. 0.47 where the bar is on 7. We can write it again. 7 पे bar है. We can write it in this form and so on. The same method, let x is equals to 0.477 and so on, and we'll mark it as equation number 1. अब एक पे बार है इस क्वेश्चन में भी, so same method will be used. Multiply both sides means LHS and RHS by 10. What here will be? 10x equals to 10 into 0.4777 and so on. After calculating, here it would be 4.777 and so on. अब what we have to do, हमें इसमें से x को split कर देना है, means 0.4777 को हम इसमें से split करेंगे. So what will be the other portion left here, that is 4.3. जब हम 4.3 को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, we'll get 4.3. Now the same way we'll write here x. We have to write in bracket why we have written here x from equation 1. 9x हो जाएगा, यहाँ से x प्लस में है माइनस होके, is equals to 4.3. x is equals to 43 upon 4.3 upon 9. ये हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे क्योंकि हमें p upon q प्रॉपर फॉर्म चाहिए, इंटीजर्स चाहिए. 43 upon 90 is the answer. Now you can check p upon q की फॉर्म में, p and q both are integers and q is not equals to 0. Now let's do the third part, that is 0.001. Here the bar is on 3 numbers. So अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 0. Very easy again. We can write it like this: 0.001, 001 and so on.
we'll let it like this as we have done in previous parts as equation 1. यहाँ let लिख दीजिएगा. Then अब बात 3 नंबर्स पे है, सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 1000. अगर 2 नंबर पे होता तो 100 पे, और 1 नंबर का हम केस कर ही चुके हैं. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000. Left hand side 1000x, here 1000 multiplied by 0.001001 and so on. We can write it like this. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, simply we'll get here 1.001001. Now हम इसमें से RHS साइड में से x को स्प्लिट कर लेंगे. We will get here 0.001001. अब इसमें क्या बचेगा इधर तरफ? Only 1. Now we'll write it like this, 1 plus x. How? Again from equation 1. हम x को यहाँ प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा. 1000x minus x equal 1, that is 999x equal 1. What is the value of x? 1 upon 999. हमने x की सेलेक्ट किया था इसे, और ये इवेंचुअली ये था, तो हमने इसको p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, where p and q are integers and q not equals to 0.